नमस्कार शिक्षक साथियों। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने 29,000 विद्यालयों और लगभग 14 लाख शिक्षकों के लिए हमेशा एक हैंड होल्डिंग के रूप में कुछ वेबिनार्स आयोजित करता रहता है। सारे वेबिनार्स का मकसद यह होता है कि विद्यार्थी एक भय मुक्त वातावरण में अध्ययन करें, एक आनंदपूर्ण वातावरण में, जॉयफुल एनवायरनमेंट में उनकी लर्निंग हो सके और लक्ष्य होता है कि अल्टीमेटली बच्चों को लाभ पहुंच सके। आज की वेबिनार कुछ मायनों में बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज की वेबिनार का लक्ष्य शिक्षक साथियों का तनाव प्रबंधन है, उनकी वेलबीइंग है। और साथियों, हमारा एक सीबीएसई ट्रेनिंग यूनिट का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है विच इज ऑन हैप्पी क्लासरूम्स। उस हैप्पी क्लासरूम्स मॉड्यूल का पहला स्टेटमेंट है हैप्पी टीचर क्रिएट्स हैप्पी क्लासरूम्स। So at CBSE, we think that happiness of our teacher is very, very important and we should focus on it. साथियों, तनाव प्रबंधन एक ऐसा विषय है या तनाव एक ऐसा विषय है जो बहुत हद तक उस एडवर्टीजमेंट से मिलता जुलता है जिसमें पहली लाइन होती है डर सबको लगता है। ऐसे ही कुछ कुछ मिलता जुलता हम लोग बात बोल सकते हैं कि तनाव सबको होता है, वो कम और ज्यादा हो सकता है। तनाव के जो कारक हैं, स्ट्रेसर्स हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। निश्चित रूप से मेरे स्ट्रेसर्स अलग हैं और मेरे साथियों के स्ट्रेसर्स अलग हैं। साथ ही साथ तनाव को प्रबंध करने के लिए, तनाव का प्रबंधन करने के लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज भी हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। तो आज की इस वेबिनार में हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शशिकला वंजारी जी, जो वाइस चांसलर हैं नीपा की। हमारे साथ हैं प्रोफेसर आभा शर्मा एससीईआरटी दिल्ली से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुणा यादव फरीदाबाद से। जहां डॉक्टर प्रोफेसर शशिकला वंजारी जी शिक्षकों के जीवन में तनाव कहां कहां से आ सकता है, उन एस्पेक्ट पे एज टीचर वो अपनी बात रखेंगी। वहीं प्रोफेसर आभा शर्मा जी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, स्पेसिफिकली रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे फोकस करके अपनी बात करेंगी। तरुणा यादव जी बात करेंगी होलिस्टिक एस्पेक्ट पे, हेल्थ एस्पेक्ट पे, और वो खुद आयुर्वेद की सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो क्या हम अपने इंटीग्रेटेड मेडिसिन से किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं तनाव से, कैसे प्रबंध कर सकते हैं, उस सब पे बात होगी। सो मैं आप सभी का और हमारे 29,000 स्कूल्स के सभी शिक्षक साथियों का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी साथी सुदेश से कि वो इस वेबिनार को आगे टेकअप करें। सुदेश। Thank you, sir. Thank you, sir, for your enriching words. I am truly privileged to be the anchor of this event. It is my distinct pleasure to introduce our esteemed guests who will be sharing their insights and expertise with us today. Now, before I invite our first speaker, Professor Shashikala Vanjari, I would like to give a brief introduction of ma'am. Professor Shashikala Vanjari is presently leading National Institute of Educational Planning and Administration, that is NEPA, New Delhi, as Vice Chancellor. She was also VC of SNDT Women's University, Mumbai. The rank of Honorary Colonel in the National Cadet Corps was conferred in her in July 2018. Prior to this, she headed the Department of Education at RTM Nagpur University and led Nagpur Nagrik Sahakari Bank Private Limited as ex-vice chairperson. She has 29 years of teaching experience, 16 years of research experience, and 5 years of experience of heading First Women's University of Southeast Asia. She has 44 research papers and articles on her credit, attended several international and national conferences,
delivered more than 200 expert lectures in different academic programs. She is the chairperson of Syllabus cum Textbook Development for Foundational Stage Committee. She is a member of different academic bodies. She also received award for Commonwealth Council for Educational Administration and Management in 2014. She is a recipient of Madam Mary Curie Award from Swadeshi Vignan, Bangalore. She is contributing in the capacity of Honorable Visitor Nominee at Central University Punjab, Batinda and Ranchi. She has also guided 16 students for their PhD in education during her academic career. It is my privilege to invite you, ma'am, on stage, please. ओके साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करती हूँ विशेषतः निदेशक रामशंकर जी के प्रति, संदीप जी के प्रति और सभी मेरे जो वक्तागण हैं उनको भी मैं आदरपूर्वक नमस्कार करती हूँ। भारतवर्ष से जुड़े सभी अध्यापक को भी मैं नमन करती हूँ, बिकॉज दीज टीचर्स आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स इन द सोसाइटी, बिकॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ इमेंस वैल्यू. Society respects them a lot because they are the facilitators, they are the teachers, they are the friends and philosophers of all the student community. So I thank them for joining this particular session, which is on stress and its management. Next slide. Now see, we know that this is one symbol, or you can say that sign is reflected on the screen. What do you think about it? Next slide, Sudesh. Now see what comes in your mind. What do you think about this particular sign before defining, before explaining, before describing the stress? हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं, हमारा दिमाग पूरा ब्लैंक है और हम लोग ये एक आपको एक संकेत दिया है, मैंने क्वेश्चन मार्क दिखाया गया आपको, तो आप एकदम इमीडिएटली आप क्या समझने लगोगे? What comes first in your mind? Do you get any clue? Are you ready to wait? Do you think it's wasting time? Do you think it is blank? Can you respond to this question? Any one of you? शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि एखादा शिक्षक हमारे साथ थोड़ा प्रतिसाद दे हमें। आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है? कोई भी बात करेगा? शिक्षक जुड़े हैं हमारे साथ, उनको अलाउ किया है या नहीं सुदेश मैडम? मैम, इस वेबएक्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ स्पीकर्स ही हैं। अच्छा, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हम लोग टीचर हैं तो वी आर कन्फाइंड टू क्लासरूम. आवर रोल इज वेरी क्रूशियल इन ब्रिंगिंग द लर्निंग आउटकम इन द स्टूडेंट. हम लोग हमारे कक्षा में जब आप खड़े होते हैं या हम टीचर कहलाते हैं तो हमारे पास 4-5 बातें बहुत ही आवश्यक होती है और वो हमारी हमें समाज से मान्यता भी मिलती है कि यू आर ए गुड टीचर, यू आर ए रिफ्लेक्टिव टीचर, यू आर ए इफेक्टिव टीचर. तो हमारे रोल क्या क्या होते हैं, हमारी भूमिका कैसे हम लोग निभाते हैं? तो पहला तो काम होता है हमें कि हमारे दैनंदिन जीवन में या हमारे कक्षा में हमको पढ़ाना है. हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हमें ये सोचना है कि एम आई हैप्पी विथ माई क्लास. ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग यदि शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं तो हमें एक बहुत ही छोटी सी चीज जो है वो बड़ी आनंद देती है और वो है समाधान, सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर आउटकम. हम कक्षा में 40 मिनट 50 मिनट कक्षा में पढ़ाते हैं और बाहर निकलते वक्त ही हम यदि इवैल्यूएशन करते हैं तो हमारे को ध्यान में आता है कि नो, आई एम नॉट हैप्पी. डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स आई took for bringing the learning or to make this process more very effective. अध्यापन की प्रक्रिया बहुत ही परिणामकारक हो, प्रभावकारक हो, इसलिए हम काफी प्रयास करते हैं. फिर भी हमें कक्षा के बाहर आने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा गलत हुआ. फिर हमारा रोल आता है कि करिकुलम ट्रांजैक्शन. हम लोग कक्षा में पढ़ाते हैं परंतु प्रभावी पढ़ाना, अध्यापन करना और जो भी करिकुलम हमें we have been assigned with particular task related to curriculum,
करिकुलम है या पाठ्यांश है, उसका ट्रांजैक्शन भी अध्यापक के माध्यम से बच्चों तक पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। फिर होता है एक असेसमेंट का काम, कि जिसमें हम लोग बच्चों का असेसमेंट करते हैं और वो असेसमेंट भी हम कुछ बताया जाता है। हमारा चौथा एक कंपोनेंट होता है कि हम पेरेंट्स से भी जुड़े रहते हैं। बहुत बार हमारे पेरेंट्स भी बहुत अपेक्षा के साथ हमें मिलने आते हैं स्कूल में, और वो बताते हैं कि यस, our child, our son, our daughter, whosoever is doing very well and you are a great teacher। हम लोग अलग अलग माध्यम से एक फीडबैक भी लेते हैं। तो ये जो एक 3-4 चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, तो इससे हमें पता चलता है कि वेयर आई एम, इफ आई एम ए टीचर, आई एम प्लेइंग माई रोल नाइसली, देन आई हैव टू इवेल्युएट माई सेल्फ। और हम लोग करते हैं वो हमारे डेली के अध्यापन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वी आर इनफ कैपेबल टू जज अवर सेल्फ, और हम लोग डे बाय डे उसको इम्प्रूव भी करते हैं। पर देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल इसके उल्टा होता है, कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई टीचिंग, आई एम नॉट ग्रेटली इन्वॉल्व इन माई करिकुलम ट्रांजैक्शन, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मीन्स एंड वेज टू इम्प्लीमेंट द करिकुलम। करिकुलम की कोई कमेटी बना ली और उसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, तो मुझे वो भी एक चीज मेरे सामने रहती है। इवैल्यूएशन में मेरे को बहुत अच्छा, मैं मेहनत करती हूँ, पर बच्चों का जब मैं असेसमेंट करती हूँ तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। पेरेंट्स की मीटिंग में कॉल करती हूँ तो पेरेंट्स भी बड़े नाराज हैं, और इन टोटलिटी मुझे जो फीडबैक मिल रहा है वो फीडबैक भी मेरे लिए बहुत एक कारण बन जाता है। और उसके बाद हमारी जो मैनेजमेंट होती है, गवर्नेंस होता है, मैनेजमेंट के माध्यम से हमें बताया जाता है कि यू आर नॉट डूइंग वेल, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैनेजमेंट यानी हमारा जो व्यवस्थापन है वो भी हमसे नाराज हो जाता है, और फिर हम लोग धीरे 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 हमारा थोड़ा सा मन जो है, दिल जो है, वो कहीं ना कहीं सशक्त होने के अलावा हम लोग कहीं तो भी अशक्त बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सुदेश। और देखिए हम लोग इसी कोई कुछ अस्वस्थता हमारे मन में आती है। अब ये अस्वस्थता क्या है, इसको हम स्ट्रेस कहें, तनाव कहें, हम लोग बर्नआउट कहें, हम और कुछ शब्दों से इसको हम नामकरण करें इसका, ये मैं नहीं चाहती हूँ। पर हमारा जो एक आज का टॉपिक है कि रिपोर्टेड फ्रीक्वेंट जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, तो इसमें दिखता है, ये स्टैटिस्टिक अवेलेबल है कि ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों में स्ट्रेस पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इन कंपैरिजन टू अदर ड्यूटीज और अदर एम्प्लॉइज। अभी देखिए ये स्लाइड में हमने एक स्टैटिस्टिक लिया है और उसमें दिखाया गया है कि वेलबींग ऑफ टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग एडल्ट्स 2022 का ये डेटा है, और इसमें बताया जाता है कि भाई देखिए फ्रीक्वेंट जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, बर्नआउट है, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन है, नॉट कोपिंग वेल विथ जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, और रेजिलियंस है। तो इसमें ये यदि हम लोग तुलना करते हैं तो हमारा ग्रीन जो एक बार दिखा रहा वो प्रिंसिपल का है, लेफ्ट साइड में ब्लूइश जो है वो टीचर का है। ये कंपैरिजन यदि करते हैं हम लोग तो हमें फिर से दिखता है कि जॉब रिलेटेड स्ट्रेस ये प्रिंसिपल्स और टीचर्स में है। प्रिंसिपल्स भी कहीं कम नहीं, हमारे उनको भी स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने जो एक पहली स्लाइड दिखाई कि जिसमें टीचिंग, करिकुलम ट्रांजैक्शन, असेसमेंट, ये सब चीजें बताई मैंने, तो देखिए अध्यापन का जब हम काम करते हैं तो हमें कौन सी चीजों के कारण हमें परेशानी होती है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, इनकन्वीनियंस फील होता है, कहीं ना कहीं हमारी एंजाइटी बढ़ती है। अभी इसी को हम लोग स्ट्रेस कहेंगे, या स्ट्रेस क्या होता है अलग से उसको कैसा डिफाइन करेंगे ये हम लोग बाद में सोचेंगे। डू यू हैव स्ट्रेस? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, डू यू हैव स्ट्रेस? कैन यू डिफाइन इट? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग शब्दों में उसको डिफाइन कर, अरे आज तो बहुत प्रेशर है, अरे मैनेजमेंट तो मुझे अप्रिशिएट नहीं करती, काफी तनाव है। तो हम लोग वी ourselves आर नॉट एबल टू डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंजाइटी, व्हाट इज प्रेशर। बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं,
और हम खुद ही डिफाइन नहीं कर पाते कि भाई ये स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, ये प्रेशर है, ये क्या है। तो मुझे एक अध्यापक के नाते से सभी अध्यापक को ये बताना चाहती हूँ, डोंट डिफाइन इट। आप इसको डिफाइन करना छोड़ दीजिए। हमें कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट, इनकन्वीनियंस लग रहा है, हम क्लास में जाते हैं तो जो आनंद हमें लेना चाहिए वो आनंद हम नहीं लेते हैं, आनंद कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। नेक्स्ट स्लाइड। और उसी को ही हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। अभी ये स्ट्रेस का जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस मैंने बताया, 2 पैन्स बताए हैं। एक पैन में मैंने स्ट्रेस रखा है, दूसरे पैन में मैंने कोपिंग रिसोर्सेस रखे। कैन यू बैलेंस स्ट्रेस विद कोपिंग रिसोर्सेस? दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत बार हम लोग ह्यूमन बीइंग होने के कारण एवरी वन ऑफ अस इज हैविंग स्ट्रेस मोर और लेस। द परसेंटेज में डिफर फ्रॉम 3% टू 90%। बट देखिए कि ऐसा कोई अध्यापक नहीं होगा कि जिसको स्ट्रेस नहीं है। तो पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि हम अध्यापक हैं, हमको हमारा प्रोफेशन एंजॉय करते आना चाहिए। एक पैन हमारा पूरा स्ट्रेस से भरा है, वो नीचे गया है, दूसरा पैन हमारा ऊपर है। हमें ये दोनों यदि हम लोग बैलेंस करते तो हमारा पूरा बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रेस भी बैलेंस होगा कोपिंग रिसोर्सेस के साथ। कोपिंग रिसोर्स के वजन जो है वो दूसरे पैन में डालेंगे तो हमारा स्ट्रेस बैलेंस हो पाएगा। अभी इसमें हम कौन सी बातें कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। देखिए, पहले तो आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर, तो पहले तो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमारे माइंड में क्या हमारे प्रोफेशन के बारे में हमारी समझ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, हमारे हम यदि टीचर है तो पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि क्लास में मैं 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 घंटे के लिए मैं अध्यापन का कार्य करती हूँ। तो मुझे तो पहले दिमाग में रखना है कि मुझे वो एंजॉय करते आना चाहिए। अभी इतने सारे मैंने कॉजेस या स्ट्रेसर्स रखे हैं। बहुत बार हमारा स्ट्रेस इस कारण भी होता है कि महीने की सैलरी 1 तारीख को नहीं हुई, फिर सैलरी कम मिल रही, ज्यादा मिल रही, हाई टीचिंग लोड है हमारे। मुझे मालूम है केंद्रीय विद्यालय का जो एक स्वरूप है, प्रोसेस है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। मैंने एक 26 दिन केंद्रीय विद्यालय में काम किया है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि एंगेजमेंट होती है, ज्यादा के क्लास होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, हाई टीचिंग लोड होता ही है। लैक ऑफ टीचिंग एड्स। अभी आज के युग में हम लोग आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग करना चाहते हैं, तो हमारी लैब है या हमारी क्लासरूम है वो रिसोर्सफुल नहीं है, हो सकता है उसका भी स्ट्रेस आ सकता है। पुअर एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल्स टू टीचर्स। बहुत बार हमारे बॉसेस जो होते हैं उनके कारण भी हमें स्ट्रेस आता है। बहुत बार मैंने पहले दूसरे स्लाइड में बताया कि यू डिड नॉट गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द बॉस, देन अगेन यू विल फील दैट कि यू आर अंडर प्रेशर। अभी वो तनाव की जो स्टेज है ना वो बाद की है, पर पहले तो हमें लगता है कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रही। मेरे बच्चे भी कभी नहीं बोल रहे कि आप मैडम यू आर टीचिंग वेरी वेल, यू आर मोस्ट डायनामिक टीचर, या यू आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचर या रिफ्लेक्टिव टीचर। लैक ऑफ टीचिंग एड्स नहीं है हमारे पास, कम है। पुअर एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल है या हेड है, वो कभी आपको अप्रिशिएट ही नहीं करती। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत बार हमारी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, अच्छा साधन हमारे पास नहीं है। मुंबई शहर की लोकल ट्रेन कभी बंद हो गई तो उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। अनेक शहरों में ट्रैफिक जाम होता है, दिल्ली में भी ट्रैफिक का बहुत इशू होता है। लो सेल्फ एस्टीम, हम खुद ही लो सेल्फ एस्टीम रखते हैं, हमारे खुद के प्रति हमें आत्मविश्वास नहीं, हमारी खुद की प्रतिष्ठा हमको नहीं मालूम कि हम क्या है। पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, आप देखोगे तो बहुत सारी देहातों में जो स्कूल्स है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत पुअर होता है। थ्रेट फ्रॉम रूड स्टूडेंट्स, क्लास में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। मैं एक अनुभव बताती हूँ कि मैं जब आपके जैसी, या बिल्कुल शायद अभी मुझे एज मालूम नहीं है कि कौन से एज में आप क्लासिफाई कर सकते हैं हम आपको, पर मैं जब यंग थी, बिल्कुल मैंने नया नया अध्यापन का काम शुरू किया था, मेरे क्लास में एक बच्चा बहुत हंसता था, इतना हंसता था कि वो हंसने लगा तो मुझे एकदम मेरे दिमाग में कुछ तो भी बम फूटता था।
कि मुझे पता ही नहीं चलता था, यानी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग विथ माय टीचिंग। तो मुझे उसने जब हंसना शुरू किया तब मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे टीचिंग पे ही कुछ गलत, कुछ कमेंट्स मन के मन में ही कर रहा है, और उसके कारण मुझे स्ट्रेस आता था। बाद में मेरे को पता चला कि मैंने जब एजुकेशनल टूर के लिए हम गए, मैंने उसको पूछा कि मैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर दिस टिपिकल बिहेवियर। तो फिर वो स्पेल आउट हुआ, उसने मेरे साथ कुछ शेयरिंग किया और वो रीजन कुछ अलग ही था, और उस दिन से मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति, वो विद्यार्थी के, छात्र के प्रति एक आदर निर्माण हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस हमारे क्लास में आते हैं। पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम के साथ हमारे स्टूडेंट्स भी बड़े रूड होते हैं। थ्रेट फ्रॉम सम एक्स्ट्रा स्मार्ट टीचर्स, हमारे जो हमारा एक प्रोफेशनल स्पिरिट होना चाहिए वो नहीं होता है। स्टाफ रूम में हम बैठेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें कहने लगेंगे हमारे मित्र, अरे आज तो क्या तुम्हारे क्लास में बड़ा हंगामा हुआ था, आप क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। उससे भी हमें तनाव या हमें कुछ अनइजीनेस हमारे इसमें आ जाता है वर्तन में। फिर हमारे साथ ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट वाली समस्या हमेशा रहती है। क्लास में 80 बच्चे, 100 बच्चे, 90 बच्चे होते हैं। तो ये ओवर पॉपुलेशन के कारण भी हम सबको, सब तक हम लोग, हमारा रीच आउट कम पड़ता है। हमारा जो भी टीचिंग का हमने जो भी एक स्ट्रेटेजीज बनाई है कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन आंसर इज द बेस्ट मेथड टू प्रोवोक देम टू स्पीक एंड शेयर देयर आइडियाज। तो ओवर पॉपुलेशन रहा क्लास में तो उसकी भी हमें दिक्कत होती है। डेडलाइन होती है, डेडलाइन बहुत सारी चीजों के लिए डेडलाइन होती है। अभी आपने असेसमेंट करके मार्कशीट देना है, फिर ये काम करना है, फिर कुछ एक्टिविटीज होती है उसके लिए डेडलाइन होती है। अब ये सब ऊपर के जो भी पॉइंट्स बताए मैंने, इसके कारण स्ट्रेस तो आता है। अब फिर से मैं कहूंगी कि मैं उसे तनाव नहीं कहूंगी, मैं उसके लिए, मेरे पास शब्दों का प्रयोग करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, परंतु मैं कहूंगी कि हम लोगों ने हमारा एक कंफर्ट जोन बना के रखा है और उसको हम लोग कंफर्ट जोन के बाहर आने के लिए तैयार नहीं, और उसको ही हम स्ट्रेस का नाम दे रहे हैं। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्लास में कोई रूड स्टूडेंट है और वो मुझे कोई गलत चीज पूछता है या एक आधी चीज पूछता है, मैं उसका आंसर नहीं दे पाती, तो मुझे स्ट्रेस आने का कोई कारण नहीं। मैं बताऊंगी उसको, मैं, मेरे को तुम्हारा जो क्वेश्चन है, तुम्हारा आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर आप बता सकते हो, आप बता सकते हो, आप दे सकते हो। रिसोर्सेस नहीं मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वही तो शिक्षक की सबसे ज्यादा मेहनत या शिक्षक का जो भी एबिलिटी जो प्रूव करने का वक्त है वो वही है कि भाई मिनिमम रिसोर्सेस में मैं अध्यापन का कार्य कैसा अच्छा करूंगी। बहुत सारी वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, वेल इक्विप्ड क्लास, स्मार्ट क्लास होने के बाद तो सभी पढ़ाएंगे, पर मेरा एक ऑर्डिनरी क्लास है, वो क्लास में बहुत अच्छे से चीजें नहीं है, फिर भी मेरा इलस्ट्रेशन, मेरी बातचीत, बच्चों के साथ मेरा ट्रांजैक्शन, बच्चों के साथ मेरा लगाव, बच्चों के लिए मैंने मुझे जो करना है वो सब मेहनत, वो भी मुझे सेटिस्फैक्शन दे के जाता है। और इसलिए हमें ये चीजें ध्यान में रख रहे हैं। अभी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि मुझे क्लास लेना है, मेरा 10 बजे का क्लास है, तो मैं रोज 9 बजे निकलती हूँ, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द स्कूल है, तो मुझे बस पकड़ना है, मेट्रो पकड़ना है या जो कुछ भी करना है, तो मैं मेरा अपना प्लान उसके हिसाब से करूंगी। और ये सब चीजें जो है, रिम्यूनरेशन वो भी एक कारण है कि भाई हमें क्या सैलरी मिल रही, समय पे सैलरी हो रही या नहीं हो रही। अभी ये चीजें जो कुछ है उसको हम लोग उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, हम लोग उसको क्लासिफाई करें कि द थिंग्स विच आर कन्फाइंड टू मी एंड द थिंग्स विच आर कन्फाइंड टू रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडीज। तो हो सकता है कि हमारा तनाव कहां से कहां तक चला जाएगा और गायब होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें पहले तो, नेक्स्ट स्लाइड, मैं बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रेस हमें जो आता है, एक तो पहला सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट
मुद्दा ये है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, you should be able to make your strategies at your own. स्ट्रैटेजी इसीलिए टीचिंग के लिए एक पेडागॉजी का जो शब्द प्रयोग किया गया है वो बहुत ही कॉन्क्रीट है, बहुत ही मीनिंगफुल है, इट हैज सम लॉजिक. हम लोग स्ट्रैटेजीज करना सीखे. पहले तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू एसिमिलेट इन माय पर्सनालिटी, आई एम ए टीचर, आई हैव टू बी देयर इन टाइम, I have to be there with full equipments. Equipments means whatever the availability, considering the availability of equipment. I should know the science of teaching. I should know each and every aspect related to teaching process. मुझे तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब मैं एज ए टीचर क्लास में खड़ी रहूंगी तो मेरा जो होमवर्क है, मेरा जो एक पूरा टास्क है, वो टास्क अंतिम क्षण तक मैं लेके जाऊं, इसका मुझे पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हमारी टीचर जो है, हमारी अध्यापिका जो है, वो एक अच्छी टीचर है, और इसलिए उसकी बाकी जो चीजें हैं वो डाइल्यूट हो जाती है. और ये होने के बाद आपको समझ में आएगा कि वंस यू अचीव दैट लेवल ऑफ ए टीचर, तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेस यानी क्या है. स्ट्रेस है कि जब भी आपको डिस्कम्फर्ट लगता है या कहीं ना कहीं ऐसा अस्वस्थता लगती है, एंजाइटी बढ़ती है. अभी ये स्ट्रेस साइकोलॉजी की भाषा में बड़ा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट हम लोग कहीं ना कहीं अस्वस्थ होते हैं, उसी को ही आप स्ट्रेस कह सकते हैं. इट इज इन सिंपल वर्ड. ये ममता पाराशर है, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में जो डिफाइन किया वो मैंने आपके सामने रखा. अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि कोपिंग रिसोर्सेस हमारे पास कैसे होना चाहिए. देखिए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं या दिन भर हमारा टास्क करते हैं, और एक क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से रखा है कि हाउ कैन टीचर्स इफेक्टिवली बैलेंस द demand of their profession and personal well-being, especially considering the unique stressors they face in the education field. देखिए, सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे जो जीवन की प्रक्रिया है उसमें हमें हर रोल एक फिक्स टाइम के लिए करना पड़ता है. जैसे अभी फॉर एग्जांपल कि मुझे ये टास्क रामशंकर जी ने दिया, और अब मैं एक इंस्टीट्यूट की हेड हूँ. अब मैं ये यदि सोचने लगूं कि भाई मेरा लैपटॉप कौन ऑपरेट करेगा, घर में तो मेरी पीएस नहीं है, घर में तो मेरा समय, अभी कल भी 1 घंटा हमने डिस्कशन किया और अभी भी 2:30 बजे से इसके पीछे लगे हैं, तो 2-3 घंटे तो चले गए. डेलीबरेशन तो 30 मिनट्स का है, परंतु इसके पीछे तो 1.5-2 मेरे और साथी जो है वक्तागण, उन्हीं ने उन लोगों ने भी काफी समय दिया. और ये सोचने लगूं मैं, तो मुझे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो ही रहा है, होगा भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बाद में कि भाई हमने ये असाइनमेंट एक्सेप्ट की, पर इसमें तो बहुत समय गया. परंतु ये समय गया, इसके साथ मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे 2-4 आर्टिकल्स पढ़ लिए, मैंने मेरे 2 नए संपर्क बने. संदीप जैन से मेरा परिचय हो गया ऑनलाइन वर्चुअल इसमें. हमारी सुदेश जो है एंकर है आज की, उससे परिचय हो गया. तो मैं ये बैलेंस करूं कि हाँ मेरे 2 घंटे गए, पर मैंने ये भी गेन किया. तो हर समय यदि हम लोग ये सोचेंगे कि मेरा लॉस हुआ, मेरा नुकसान हुआ, फिर मेरा समय गया, मेरी एनर्जी गई, तो ऐसा नहीं. उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है. तो पहले तो हमें कोपिंग रिसोर्सेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारे पास कोपिंग रिसोर्सेस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि आप दिन भर काम करते हो, मैं अध्यापक के नाते बता रही हूँ, तो स्ट्रेस तो रहेगा ही, प्रेशर रहेगा काम का, डेडलाइंस रहेगी, रेगुलेशंस रहेंगे, पर उसको यदि आपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छे से प्लानिंग किया, तो वो मुझे लगता है स्ट्रेस नहीं रहेगा. कोपिंग रिसोर्सेस में एक हॉबी भी अपने को रखना है. जैसे पढ़ने की हॉबी, हम टीचर्स है, बहुत एक आधी किताब उठा ली और वो पढ़ने लगेंगे तो स्ट्रेस चला जाएगा. हम मूवी देख सकते हैं. हम लोग महिलाएं हैं तो दे नो वेरी वेल हाउ टू सेलिब्रेट देयर वुमनहुड. बहुत सारी चीजें हैं. एग्जीबिशंस है, बहुत अच्छे एग्जीबिशंस होते हैं. कोपिंग रिसोर्सेस में
हमारी बकेट पूरी फुल करके हम लोग वी कैन यूज दैट रिसोर्सेज फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी देखिए, आपको ये बकेट थ्योरी फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट बताई गई है. आप भूल जाइए कौन सी थ्योरी है, नहीं है. ये बकेट देखिए, बकेट में बहुत सारी चीजें. हम लोग भी हमारी एक बकेट लिस्ट या बकेट बनाकर हमारे दिमाग में रखना है कि मुझे अभी आज इतना सारा काम है, तो हाउ आई कुड मैनेज. आर देयर एनी ऑप्शंस कि मैं अभी लेट होने वाली हूं, तो घर में मैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत जाती है, बहुत सारे उनके मल्टीटास्किंग रहता है, तो वो समय नहीं दे पाती फैमिली को. बहुत बार उसको डेडलाइन फॉलो करने के कारण, फॉर एग्जांपल पेपर करेक्शंस है, तो समय नहीं दे पाती और स्ट्रेस आ जाता है. कल तो डेडलाइन है, मुझे मार्कशीट या स्कोर शीट सबमिट करना है. तो आप उसको मैनेज करने के लिए आपके पास ये बकेट लिस्ट भी होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए टू कोप अप विद द स्ट्रेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मुझे लगता है समय खत्म हो गया है. देखिए, ये एक सिंपल सा कोट है, और ये स्टीव माराबोले की पोएम है. उसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है. व्हेन ए न्यू डे बिगिंस, डेयर टू स्माइल ग्रेटफुली, एंड व्हेन द डे हैज एंडेड, डेयर टू फील एज यू हैव डन योर बेस्ट. आज दिन भर का पूरा समाचार मैंने इवनिंग को लेना चाहिए कि मैंने आज क्या क्या किया, और उसके बदले में मेरा स्ट्रेस मेरे दिमाग में कितना रहा, और मैं दिन भर किया हुआ काम और स्ट्रेस को बैलेंस करती हूँ, तो स्ट्रेस छोटा सा रहेगा, 1% रहेगा. मैंने अच्छे अच्छे काम किए, बच्चों को पढ़ाया, क्लास लिया, बच्चे मुझे मिले, बच्चों ने मेरे साथ उनके रिस्पॉन्सेस मेरे से शेयर किए, और मुझे बहुत आनंद आया है. और 2 चीजें ऐसी हुई कि जहां मैंने कुछ नहीं किया और उसके कारण मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो दूसरे दिन फिर से अगेन यू गो टू द क्लास, एंटर टू द क्लास विथ स्माइल, और लास्ट में जब स्कूल छोड़ोगे तो आप यही सोचिए कि व्हाट आई हैव डन बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, एंड डेफिनेटली दिस विल ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस. सो प्लीज सभी अध्यापकों को मेरा नम्र निवेदन है कि आप तनाव में मत रहिएगा. आप अध्यापन शास्त्र को यदि अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग बिल्कुल ये स्ट्रेस से बहुत आगे निकल जाएंगे. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Now I would like to request our next speaker, Professor Abha Sharma, to enlighten us. Professor Abha Sharma is Principal, B.Ed in charge, Research Cell and District Nodal Officer, Southeast at SCRT, New Delhi. Prior to this, she was Professor and Assistant Dean at School of Education. Professor Abha Sharma is an expert in the area of teacher education, stress management, test and measurement, educational technology, and science education. Professor Abha is a gold medalist in both B.Ed and M.Ed. She has more than 24 years of experience in academics in India. Ma'am holds a PhD in education, M.Ed, MSc in organic chemistry, and MBA. She has qualified National Eligibility Test in Education and was awarded Junior Research Fellowship from UGC. She has more than 50 papers, articles, book chapters published in national and international journals. Ma'am has participated and presented papers in more than 50 national, international conferences, and she has more than 24 years of experience in conducting interactive sessions as keynote speaker, resource person, and chairing national and international conferences, seminars, workshops. She was an academic expert for Tuning India project with University of Deusto, Bilbao, Spain. Resource person for delivering video content of Swayam Prabha, educational channel of MHRD, Government of India for B.Ed program. She is a district nodal officer for Vidyanjali, a school volunteer program of MOE, Government of India. She is a district nodal officer of Southeast District for conducting training of in-service teachers of DOE. She received the Best National Paper Award in International Conference in 2017 and 2018.
Professor Sharma received an Inspirational Leadership Award from Global Talk Education Foundation in 2021. She won the Award of Excellence in Social Service in the state of Haryana by Navjyoti India Foundation in 2021. Professor Sharma also received an Education Icon Award in the Star Rating Annual Conference in 2022. Ma'am, the floor is yours. Thank you so much. I think the screen is visible and I'm audible. Yes, ma'am. Sure. Okay. So greetings and welcome everyone. I am excited and privileged sharing this space with all of you. Thank you, Dr. Ram Shankar and Dr. Jain and Team CBSE for this wonderful opportunity. And thank you all for taking your time on this Sunday, little evening, I think, yeah, to participate in this session. Believe me, I'm going to connect with all of you, even if I'm not near you. Let us start this session with one of the question, if you allow me to ask, because I think if we are the teaching fraternity, we need to start the things with the questions so that we start thinking. So what comes in your mind moment I say stress? जैसे ही मैं स्ट्रेस बोलती हूँ आपके दिमाग में क्या चीज आती है? देखिए, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस मतलब एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, टेंशन में भी, कुछ सोच रहे होंगे एग्रेशन, कुछ सोच रहे होंगे अनइंटरेस्ट, सैडनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर क्या आप में से किसी ने ये सोचा अचीवमेंट? क्या आप में से किसी ने ये सोचा सक्सेस? क्या आप में से किसी ने ये सोचा हार्ड वर्क? क्या किसी ने इस प्रकार की चीजें भी सोची? तो ये भी एक चिंतनीय विषय है। देखिए, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? बिकॉज इन रियलिटी इफ आई से दैट it's not completely correct, but our perception actually is going negative. And there is always something, believe me, there is always something positive in everything. I mean, even if in a negative word like stress. But because negativity has hampered our brain, we have stopped thinking positive. And I must say, ladies and gentlemen, our negative thinking is the root cause of stress maximum of the times. So moving ahead, let's discuss the few of the terms related to stress, although ma'am has already discussed. Stress, we can say that anything that causes change in our system, or a product of anything that requires a change in the system, that actually causes the stress. So the change may be a good change or maybe a bad change. We need stress. See, if we are not stressed, we will not sit like this, and we will not put our head high like this and the shoulders back, and will not walk confidently. So we need to be stressed for that. So that is a huge stress, because that's going to give you a good personality, a smart teacher, a lovable teacher. But if we will not put ourselves erect like this, we will sit like this, and will not be able to give that positive vibes to our students. The aura will not be like that. So, but we need to make sure that the stress should not be too much for too long, because that actually leads to distress. You call it de-stress, or it may be called as distress. That is the negative stress. Now, moving ahead, we will just take care of that. Another question, that how might we find and we can teach our students to find the meaning and courageous dignity during the stressful period or the difficult times. So this is very common. We in daily life, we go on with huge lot of stresses, huge lot of difficult times, huge lot of problems. See, because we live in a culture that actually values the achievement and having control over our lives. But one thing I will definitely say, that there is no do and die, ladies and gentlemen, in this world, because nothing is important enough for you to take any kind of pressure that destroys your life, because you are precious. Your family is precious, your students are precious. So I always say my students to take care of their mental health, their belongings, their everything.
Now, how might we find and we can teach our students to find a meaning and you can say a courageous dignity by what we can do, we can just learn to be like water. तो नेचर एक बहुत सारी चीजें सिखाता है हमें. हमें हमेशा पानी से एक चीज सीखनी चाहिए, how adaptable it is, how flexible it is, and how it fits into any vessel. किसी भी vessel में डालिए उसी का shape ले लेता है. अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? Meaning thereby is to fit into any situation, any circumstances. So have a sense of calm, have a sense of patience. पर इन सबसे भी ऊपर एक चीज है आपके ambitions. So ambitions are extremely important. So you need to have an ambition to find your own glory, and you need to be happy, be satisfied for whatever you have, and you need to embrace the blessings and the happiness you have. See, in any type of stressful situation, say for example, we were during, I mean, in pandemic, we will never be able to forget it. It was easily observed, that we became collectively stronger as we are willing to face the adversity and the support each other through it. Now that's the greatest learning, I think, and definitely we became more compassionate to the society as sadness and sorrow opens our heart to each other. हम एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से शेयर करके काफी सारा हमने रिलैक्सेशन को उस समय में गेन किया था. Additionally, recognizing our interconnectedness might help us feel less stressful during any type of difficult times. और ऐसा ही स्कूल होता है हमारा. School is a society, and we all, the teachers and the students and colleagues are family. So we need to make the bond stronger with our colleagues, with our students, giving them the space to share their feelings so that we can save them from any problem they may face in future. अब देखिए क्या होता है कि हाउ टू डेवलप दिस अडेप्टेबिलिटी. अब टुडेज वर्ल्ड वी फेस डेली ह्यूज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर. बहुत एलिवेटेड लेवल होते हैं स्ट्रेस के, डिस्कम्फर्ट होता है, डिसऑर्डर्स होते हैं. वी नीड टू रीफ्रेम हाउ टू वर्क, हम कैसे दिख रहे हैं और कैसे चैलेंजेस आएंगे. वी नीड टू टीच दिस टू स्टूडेंट्स दैट each challenge is an opportunity. Ladies and gentlemen, this is important, that how opportunity can be utilized and can be evolved to make sure that it is there for you to grow and glow, and that by taking steps to be more open and flexible, and you will retain your brain and your body to be more adaptable. And that's the beauty a teacher should adopt. Now moving ahead, okay, this is done. So now moving ahead with the concerns and coping skills. See, there are many concerns you are well aware of. Huge lot of displacement is there. Boss ने उसको डांटा, उसने फिर अपने नीचे वाले को डांटा, फिर उसने कुलीग को डांट दिया, कुलीग ने अपने स्टूडेंट्स को डांट दिया. स्टूडेंट इज द सफरर. उसके पास कोई नहीं होता है, वो किसको डांटेगा. तो वो क्या करेगा, रास्ते में कोई पत्थर दिखा उसको, उसने ठोकर मार दिया, लात मार के फेंक दिया, या उसने घर जाके अपने पप्पी को मार दिया, या उसने घर में जाके एग्रेशन निकाला, कुछ ना कुछ. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. काफी सारी बार ऐसा होता है कि हमारा लॉस ऑफ रूटीन हो जाता है, हम रूटीन में नहीं कर पाते हैं. जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो वी मिस गोइंग फॉर अ वॉक, वी मिस गोइंग फॉर द एक्सरसाइज, वी मिस आवर मील, वी मिस ह्यूज लॉट ऑफ थिंग्स. फिर डर होता है. अभी भी काफी सारे जेरियाट्रिक पॉपुलेशन जो है उनमें डर है अभी भी वायरस का, किसी भी चीज का. फिर पीयर प्रेशर होता है, आप में कुलीग्स का प्रेशर होता है कि उसने अच्छा कर दिया, मुझे भी उतना करना है. स्टूडेंट्स में प्रेशर होता है बहुत सारा. होम लाइफ डेफिनेटली आपकी डिस्टर्ब होती है इन सब चीजों से. बहुत सारी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है आपके पास स्ट्रेस से रिलेटेड या कोपिंग स्किल से रिलेटेड. कुछ लोग मेडिकेशन लेने लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन लेने लग जाते हैं जो कि नहीं भी ली जाए तो उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके और भी हैं. मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, सोमैटिक हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. कंपल्सिव ईटिंग करने लग जाते हैं कुछ लोग, जहां स्ट्रेस हुआ तो दे स्टार्ट ईटिंग. कुछ लोग छोड़ देते हैं खाना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है. कुछ लोग सब्सटेंस यूज करने लग जाते हैं. सो देयर आर ह्यूज लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ हाउ वी कैन मेक श्योर दैट
हम इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, जब हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं तो हम इमोशनल अपने उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड टॉक विद योर कोवर्कर्स। अपने कोवर्कर से बात करिए, अपनी मदर से बात करिए, अपने आप जिनको सबसे ज्यादा, जिनसे सबसे ज्यादा आपका कनेक्ट है उनसे बात करिए। फिर वैलिडेटिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स, हमेशा आपके साथ जो आपके कोवर्कर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको हमेशा वैलिडेट करिए, उनको सपोर्ट करिए। देखिए, स्टूडेंट्स जो स्कूल आते हैं डेफिनेटली वो आपसे कुछ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। whenever the student go back, make sure that he comes with same enthusiasm next day, और वो इंतजार करे अगले दिन का कि कब वो अगला दिन आएगा और मैं मैम से मिलूंगा या सर से मिलूंगा। सो देन यू नीड टू मॉनिटर योर फीलिंग्स थ्रू आउट द डे। आपकी क्या क्या फीलिंग्स हुई पूरे दिन में, आप रात को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ ये अच्छा हुआ, आई नीड टू रिपीट इट, रिपीट द पॉजिटिव बिहेवियर्स। यहाँ ये गलत हो गया, आई नीड टू लिटिल चेंज माय आंसर्स या चेंज माय बिहेवियर एट दैट टाइम। then you need to engage in the self compassion and setting the limits। आपको हर चीज की अपनी limits रखनी है। and then you need to have some connecting with those we love each day। हम आपको हमेशा connect रखना है अपने family के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने spouse के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ कनेक्ट रखिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट। फिर बायोलॉजिकल कुछ कुछ रीजंस होते हैं, आपको डॉक्टर तरुणा यादव और अच्छे से बताएंगे इस बारे में। तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप रखिए रात को जरूर से। आप 3 हेल्दी मील्स खाइए हर दिन, एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखते हैं। सो यू नीड टू कीप एंड क्लीन द ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट। स्वच्छ भारत मिशन है हमारा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सो यू नीड टू वेरी मच फोकस ऑन हाउ योर एनवायरनमेंट इज क्लीन, दैट विल गिव यू द पॉजिटिविटी। फिर है, आप आइडेंटिफाई करिए कुछ फैक्टर्स को एनवायरनमेंट के दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर स्ट्रेस एंड एलिमिनेट देम इफ पॉसिबल। ऐसे आपके आसपास के उसमें कैसे तनावपूर्ण कुछ कारक हैं, उनसे आप दूर जाइए। फिर then you need to change your environment if you're feeling too stressed out। And then moving ahead with the cognitive areas, that you need to recognize when your thinking is being influenced by your emotional state। See, this is very important, that you need not to give into ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, इनको एंड्स बोलते हैं, दैट एलिसिट द नेगेटिव इमोशंस। ये अंदर से आते हैं आपके अंदर से कि मैं तो किसी मतलब मुझे प्रमोशन नहीं मिला या मुझे प्रेज नहीं किया, जैसा मैम बता रहे थे अभी, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ और आई एम अ बैड पर्सन, आई डोंट लुक गुड, पीपल यू नो स्टूडेंट्स डोंट लाइक मी, कुछ अनप्रोडक्टिव से थिंकिंग आने लग जाती है। आई एम जस्ट लाइक दैट ओनली, देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग आउट। ऐसे स्टूडेंट्स के भी बहुत आता है। So always make sure that you connect with your students and you need to recognize when your behavior is contributing to these emotional negative states। And then few of the more concerns are there that आप कब टफ फेज में होते हैं कि देयर कैन बी काइंड ऑफ अ प्रेशर आपके ऊपर रहता है, जैसा मैम ने बताया है, प्रोफेसर वंजारे ने, कि आपके पास बहुत सारा वर्क प्रेशर रहता है, टफ टाइम होता है, एनुअल डे भी बनाना है, एग्जाम के पेपर्स भी बनाना है, आपको स्टूडेंट्स को भी तैयार करना है, एमओयू के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, ह्यूज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, आपके बकेट में बहुत सारी चीजें होती है। बट देन दिस इज अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी एट टाइम्स, but also this can lead to stress, or stress नहीं, distress rather। So this can also lead to mistakes। बहुत सारी चीजें आपके ऊपर होती हैं, हैम्पर हो जाता है आपका ब्रेन, तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करने के लिए हो जाता, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है आपसे। अब इसके लिए आप कैसे कोपिंग स्किल्स करेंगे कि आप ना सबसे पहले दोनों पे अटेंशन करो, किसको, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने सोमैटिक और मेंटल हेल्थ को, और देखिए कहाँ कहाँ साइंस ऑफ टेंशन आ रहे हैं आपको, कैसे कब कब लग रहा है कि आप नॉर्मल से नहीं लग रहे हो, आपको डिसइक्विलिब्रियम फील हो रहा है ना। तो उस स्थिति को देखिए, किस स्थिति में ऐसा हो रहा है। ऐसी स्थिति को ओपनली डिस्कस दिस डाइस्ट्रेस एंड फीलिंग। आप कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन में अपने को वर्कर्स के साथ, या आपके स्कूल में काउंसलर्स भी होंगे आजकल, तो उनके साथ डिस्कस करिए। देन नॉट गिविंग इनटू द फीलिंग दैट इफ यू डोंट डू इट
it won't be done right. ये कभी मत सोचिए कि अगर मैंने नहीं किया तो ये होगा ही नहीं कभी भी, और ये तो सही तो हो ही नहीं सकता अगर मैंने नहीं किया तो. So there is a replacement of each and everything and each and everyone in this world. So make sure that you are important. Then you need to make the active choice to disengage. अगर आप बहुत ज्यादा उस चीज में उलझ गए हैं, हमेशा ऑप्शन चुनिए कि आप उस जगह से डिसएंगेज हो जाएं. इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि आपके पास और कौन से कंसर्न्स हैं आपकी सेल्फ केयर एक्टिविटीज के लिए, आपके रूटीन्स के लिए. देखिए, हम बहुत सारे चीजों में एंगेज रहते हैं, जैसे कि हेल्दी फूड खा रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, आप टेलीविजन देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, फिर आप इमोशनल अपनी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं किसी किसी के साथ. पर क्या होता है, कभी ऐसी भी सिचुएशंस आती है जैसे हमारे साथ पेंडेमिक में आई थी कि हमारी ये सब चीजें नहीं हो पाई थी, कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी. सो दैट वाज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस. बहुत ज्यादा हम तनाव में थे उस समय, क्योंकि बच्चे हमारे घर के, हमारे स्टूडेंट्स, मैडम ये नहीं हो पा रहा है, मैम ये तो है ही नहीं, हमारे पास पेपर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास कार्डबोर्ड नहीं है, हम कैसे करें. सो देयर वर ह्यूज लॉट ऑफ negative situations which came in front of us and we were helpless, ladies and gentlemen. But in that situation you need to be creative and you need to use YouTube to do exercises to find out the ways हम इस situation में क्या कर सकते हैं. If you don't have paper, what can be used instead of paper? If you don't have a kind of a glue or a Fevicol, what can be used in place of that? मेडिटेशन करिए, स्टूडेंट्स को सिखाइए माइंडफुलनेस कैसे किया जाता है, वीडियो गेम्स खेलिए, बुक्स पढ़िए, गो फॉर अ वॉक, टॉक विद योर फ्रेंड्स ऑनलाइन, कनेक्ट करिए लोगों से. उसके बाद लाइकवाइज इसके अलावा आप देख सकते हैं काफी सारी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं. तो बनाने की कोशिश करिए, अपने कुछ हैबिट्स को और बिहेवियर्स को चेंज करिए. कुछ लोग ऐसा होता है ना कि फ्यू पीपल फाइंड नेगेटिव इन द पॉजिटिव एज वेल. तो वो सोचते हैं कि जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनको इस बात का टेंशन हो जाता है कि मुझे किस बात का टेंशन क्यों नहीं है. सो दैट्स एक्चुअली फ्यू ऑफ द पर्सनैलिटीज हैव. It's okay. And then you need to change your way of thinking. ये कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रिलैक्स्ड हूँ पर इसका कोई प्रैक्टिकल यूज तो है ही नहीं, सो व्हाई आई शुड बी रिलैक्स. इस प्रकार से काफी सारे लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं. आपको आगे डॉक्टर यादव बताएंगे कि स्लीप, रेस्ट और बैलेंस्ड डाइट और फूड का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में. सो मिनिमम 7 to 8 आवर्स का आपका स्लीप बहुत जरूरी है आपके ब्रेन को पॉजिटिवली फंक्शन करने के लिए. फिर है आपका देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिटिसिज्म को कितना ग्रेसफुली लेते हैं. तो जैसा टीचिंग फ्रेटर्निटी में हम जब इन सर्विस टीचर्स को SCERT में, प्री सर्विस टीचर्स को SCERT में हम जब ट्रेन करते हैं, सो वी ऑलवेज टेल देम बिफोर गिविंग द फीडबैक, सी दिस इज फीडबैक एंड फीडबैक is there to shape your behavior from the undesirable to the desirable one. So that's what the criticism does. Whenever the criticism or the feedback is there, you need to take it gracefully, and that's what is important. इसके अलावा काफी सारी और भी चीजें हैं कि आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रेज करिए. स्पेयर टाइम फॉर योर स्टूडेंट्स. अगर कोई बच्चा आया है, उस समय आप खाना खा रहे हो या उस समय आप किसी और एक्टिविटी में एंगेज्ड हो, सो डोंट से दैट कांट यू सी दैट आई एम एंगेज्ड समवेयर, बेटा प्लीज प्लीज बाद में आना, आई एम क्रॉस्ड. Many of the times you show that type of anxious behavior in front of students. बच्चे भी थोड़े से सहम जाते हैं. So you have to have that patience or you need to be cool teacher in that situation. अगर कोई भी स्टूडेंट आपके पास आया है तो ये सोचिए कि जरूर इसके पास कुछ बात होगी जो ये मुझसे शेयर करने आया है. If you will not pay attention to that student at that moment, maybe वो घर जाते जाते जितने भी मैंने आपको एंड्स बताए थे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स बताए थे, वो वही सोचते सोचते जाएगा या जाएगी अपने घर, और कुछ भी हो सकता है, anything can happen. So we need to take care that how much we are responsible for our students. Then resilience सीखिए. Resilience क्या होता है? It's an ability to effectively deal
cope up with, recover from or adopt to the stressful life situation. ये सीखिए कैसे आप mental health awareness को ध्यान देते हैं, कैसे positive support लेते हैं, कैसे empowerment करते हैं, अपने confident कितने रहते हैं हर situation में, cool कितने रहते हैं, आप अपने mindful कितने रहते हैं, अपनी चीजों को कितना अच्छे से manage कर पा रहे हैं. So that's what is the beauty. And then you need to have the gratitude journal. देखिए क्या करता है, ये भी बहुत प्यारी सी चीज है. ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या करता है ये, और रोजमर्रा की जिंदगी में आपके यू हैव ह्यूज लॉट ऑफ पीपल टू whom you want to thank, you need to say gratitude. So it's you know how you need to create a gratitude journal. You need to express your feelings of appreciation, of thanks to all those who helped you, who appreciated you, and were a big support system somewhere in your life. And if you can't do anything like this, you can at least drink a lot of water, you can dance, you can listen to your favorite song, you can play, खेल सकते हैं आप इंटरैक्टिव करिए अपनी क्लासरूम को, गार्डनिंग करिए, स्टोरी टाइम करिए क्लास में. इवन इफ यू आर विद बड़े बच्चा हायर सेकेंडरी क्लासेस के साथ है, फिर भी यू कैन गो फॉर स्टोरी टेलिंग एंड डेफिनेटली दे विल स्टार्ट लविंग यू. देन ग्रुप डिस्कशंस करिए, स्टूडेंट्स की क्रिएटिव साइड आगे आती है. देन रीडिंग हैबिट डालिए. ऑल्सो यू कैन गो फॉर शॉपिंग. इतने लोकल जो बाजार होते हैं वो शॉप करिए, वहाँ के लोगों के साथ बार्गेन मत करिए, उनको कोशिश करिए कि उनका जितना आप मनोबल बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए. फिर उसके बाद है आप सोशलाइज होइए, बाहर जाकर के मिलिए लोगों से. बाहर नहीं जा सकते तो इंटरनेट से कनेक्ट करिए, फैमिली टाइम करिए, अपनी बातों को डिस्कस करिए, आपने कैसे कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है वो डिस्कस करिए. सो फन करिए, मेडिटेट करिए, एंड देन शेयर करिए अपनी थिंग्स को, अपनी बातों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, प्ले विद किड्स, सर्व टू द अंडर प्रिविलेज्ड, मीट योर स्कूल क्लासमेट्स, अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलिए, कोशिश करिए कि आपका गेट टुगेदर हो, कुक करिए कोलीग्स के साथ, फायरलेस कुकिंग करिए, दूसरे टाइप की कुकिंग करिए, और इस प्रकार से आप एंजॉय कर सकते हैं. सो मे आई गो विद वन ऑफ द रिलैक्सेशन थेरेपी इफ टाइम परमिट्स? Yes. So I'll quickly go with one of the relaxation therapy. Please close your eyes. Feel comfortable wherever you are sitting. Remove your glasses. Now, rest your hands in your laps or on the arms of the chair. Take a slow breaths. Keep your eyes closed and spend a few minutes practicing the deep breathing. Inhale and exhale. Once again, inhale and exhale. When you are feeling relaxed, picture yourself moving towards a secret garden. Imagine that the sun is shining, the birds are singing, and you feel totally safe, totally calm, and totally at peace. You make your way down this path one step at a time, and there is a soft breeze. Feel the breeze. You're feeling incredibly happy and peaceful. See, just ahead of you, you see a huge wooden gate. And we are going to make our way to this gate. You are still feeling safe, totally calm, and totally at peace. You reach and push the gate open and step through
to the other side. As you look up and take a step forward, you see in front of you your secret garden. This is your secret place, and nobody else is allowed. Take a look around. You can see beautiful flowers, big green trees, and there is a waterfall too. Feel the velvety grass under your feet, and you're feeling totally safe, totally calm, and totally at peace. As you take a couple of steps forward, you notice a huge oak tree at the end of your garden. Can you hear birds chirping? Can you hear the wind gently blowing through the trees? Can you hear the water trickling down from your waterfall? As you reach the tree, you're amazed at its size. You turned around and sat at its base, and your back resting gently against the bark. Knees bent to your chest, with your toes playing with the grass underneath your feet. You take a deep breath and breathe out. You feel totally safe, totally calm, and totally at peace. In fact, you have never felt this peaceful before. It is now time to return back to where we started, taking all of these precious memories and feelings with us. You make your way back towards the garden gate, feeling incredibly peaceful. And we are back on the path now and back to where we started. Still feeling totally safe, totally calm, and totally at peace. Now, all of you, please rub your palms, feel the warmness, and move the palms all around your face slowly, and open your eyes, feeling relaxed but alert. And you have returned to your surroundings, but a calm state will have replaced any anxiety or worry that you originally felt. Now, you need to work on translating this calmness into the rest of your evening. Thank you all for spreading smiles, happiness, peace, and harmony. One thing I just wanted to say while concluding, that when it rains, look for the rainbow. And when it's dark, look for the stars. Thank you all so very much. These are the references. And I hope everyone would practice positivity and mindfulness. And I promise you, you will feel more energized, more engaged, and efficacious by relaxing, reflecting, reframing, and rebooting yourselves. Thank you all so very much for the patient listening and your today's gratitude for all of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I would like to invite our next and last speaker for the day, Dr. Taruna Yadav. Dr. Taruna is a senior Ayurvedic doctor, author, speaker, stress and lifestyle management expert, and the founder of Dr. Taruna's Holistic Health, a preventive health and corporate wellness organization. She combines her expertise in Ayurveda, nutrition, and stress management with her more than 15 years of experience in preventative and holistic health to help people attain their utmost physical and emotional well-being. She has written books on holistic well-being, including stress management at workplace, happiness and well-being, home remedies for common health ailments, and healthy lifestyle and nutrition for Indian PSUs such as IUCL and GAIL.
Her expertise has led her to be invited as a speaker at various prestigious forums and contribute to expert columns in esteemed media publications such as India Today, Hindustan Times, Newsweek, Vogue, Femina, Grazia, LA, and more. Through her company, Dr. Taruna aims to provide authentic research-based information and promote alternative health practices to help individuals manage lifestyle problems and attain holistic health. Holistic Health has been recognized as one of the 10 most promising corporate wellness providers in 2023 by Silicon India magazine. We are grateful to have you on our stage, ma'am. Thank you so much, and good evening, everyone. I'm very happy and delighted to be here today presenting the session on stress management for our respected teachers. I would like to thank Dr. Ram Shankar, Dr. Jain for organizing this wonderful initiative for our teachers and inviting me to share my expertise for Teachers Pan India. In today's session, I'm actually going to discuss the perspective on stress from an Ayurveda perspective, and I'll be discussing, some simple tips and tricks to manage stress. Professor Abha and Professor Shashikala, they have already, spoken really well about the topic, the stressors, the kind of stressors teachers tend to face in their day-to-day routine. So I'm not going into that. The whole idea will be to I'll be actually discussing some tips, tricks, and how we can actually take care of this stressed situation when we are in that situation. So let me just a second. Is my slide visible? Yes, ma'am. Okay, so I think I'm not able to move it forward. Just a second. Yes, sorry. So, so today, I'm going to speak about, 3 pillars to find your calm. And what are these 3 pillars? They're basically, before going ahead, let me just, discuss some effects of stress on human body. So we have understood, the different kind of stressors that teachers face in a day-to-day, in their day-to-day activities, but how stress actually manifests in their bodies. Let's understand that. So stress manifests in the body in the form of physical signs, mental signs, emotional signs, and behavioral signs. Physical signs such as, it tends to increase the heart rate. There can be muscle aches, stiffness or pain. Blood pressure tends to rise, frequent colds and flu. People tend to face weight gain or weight loss when they are under constant stress. There could be headaches, digestion related issues that could be, irritable bowel syndrome or constipation, sweating, nausea, fatigue, trembling, etc. So these are some of the physical symptoms or signs manifest in the body when we, do not take care of ourselves, and, stress tends to stay, in our mind and body. Then, how it affects our behavioral. Some of the behavioral signs are, increased smoking, drinking, drug use, aggression, changes in the eating habits or sleeping habits, nervousness. Some of the mental signs are difficulty concentrating, decreased memory, confusion, difficulty making decisions, having bad dreams, decreased libido, inattentiveness. Some emotional signs are how stress actually affects you emotionally. It can actually lead to anxiety, anger, short-temperedness, impatience, worry, fear, frustration. So these are some of the signs. If you happen to see any of these signs, it's very important to actually take a pause and reflect actually what is going on, and then taking right actions at the right time. That actually helps. So understanding, as a doctor, I always prefer
people having that kind of awareness about the concern. Once you're aware of the signs, it's very, then it becomes like easy to take an action. Sometimes, what happens, people, they're not even aware of, what kind of impact it is giving into our body, whether it's emotionally or physically or in our behaviors. So once we understand, the right action can be taken. So these are some of the important signs that one must be aware of during the state of stress that it manifests in the body. Now, 3 pillars of stress management that I'm going to discuss are, balancing your vata energy, which is a movemental energy of the body. I'll be explaining this in just a couple of minutes. Then incorporating some herbs and tonics, which actually relax your mind. Then having a right diet and lifestyle for your mind and body. So stress is a very subjective issue, and stress management, it's a very, very vast subject, and there are many stress management techniques, stress management strategies, stress management skills available. But what happens, it's very important to understand how stress is actually impacting you, and then choosing the right techniques for the same that helps in a longer run. So let's understand what is this vata energy, and why, how and why should we manage it. So I'll just give you a little background of Ayurvedic science, which is our ancient science. And it talks about 3 energies. It says our body is made up of 3 bioenergies. These are vata, pitta, and kapha. And vata is the element which is basically made up of air and space. The air energy is the dominating energy here. The pitta element is made up of fire and water. The fire energy is the dominating energy. And the kapha element is basically the element which is made up of earth and water energy is the dominating energy. So coming back to the vata energy, that actually comprises our body, it's primarily the air energy. And what is the function of air in general? So air, if I'll tell you to think about air, the first thing that comes to our mind is it's moving, something which is light, which is always moving. So vata energy is the movemental energy of the body, which controls all the movements of the body, including your voluntary, involuntary, even the movements of your thoughts. So, coming back to our subject of stress, so this particular energy, which is a movemental energy, it actually takes care of the movements of your thoughts and emotions, specifically you can say the movements happening inside your mind from an Ayurvedic perspective. So what happens when this energy is balanced? You feel it leads to a lot of passion. It leads to you can say you have a lot of creative ideas. You learn things very, very quickly. You're very, very passionate, motivated, enthusiastic. That's the balanced state of this energy. But when stress strikes, what happens? This energy tends to get imbalanced, and then of course we tend to get a lot of movements of thoughts. So the racing thoughts, having a lot of thoughts at the same time, that leads to concerns like stress, anxiousness, and then of course other mental health issues like depression and anxiety, etc. So when we are not able to control the scenario, it affects your thinking. The vata energy of the body, it tends to get imbalanced. So the properties of vata in general, it's very light, it's dry, it's always moving. So when we have to balance this vata energy, we need to do something, which actually nourishes the body and mind, which actually, makes you slow down, because vata will makes you having all these movements all the time, whether it's a physical movement or the
mental movements of your thoughts and emotions. So we have to somewhere or the other slowing down will actually help in balancing this vata energy of the body. So that's a little glimpse of the vata energy that which controls all the movements, especially pertaining to mind. That's how it leads to all these multiple thoughts, racing thoughts, and causes stress. Now the thing is how to balance this vata energy and manage stress. The first thing that I just mentioned it is because it's the energy is all about moving. You will not realize, but there will be movement of your thoughts. You will have rapid breathing, you will have more heartbeat, the heartbeat will be fastened. So there's a lot of energy, movemental energy in the body. So when we slow down, and how do we slow down? It's by slowing down the breathing pattern, and just sitting in the calm place. That actually helps to take a control of over this energy. Establishing a routine is again a very, very important aspect of this particular activity of balancing vata, because as I just mentioned, when you are stressed, this vata energy will actually lead to all the movements, and there will not be any established routine that you will have. So forcefully making yourself, establishing a routine, having meals at the same time during the day, going to bed at the same time will actually help in balancing this energy. When this energy is erratic, or it's imbalanced, it actually leads to concerns like sleeplessness, which is a very common concern that happens when the body is undergoing a period of stress. So sleeplessness is again it's a concern that happens because of the imbalanced vata energy. Then second, you can actually take a control of your prana via relaxation technique. So what happens, the prana is the life force energy, or you can say your breath. So as I just mentioned, the air energy, it can be easily understood as the energy of your breath as well. That represents the balanced or the balanced state of vata energy. So it's one movement that is controlling your life through the day. So the easiest method to take control of your thoughts, of your energy, is to have a control over your breath. We talk about deep breathing, but from an Ayurvedic perspective, if we see, when we actually slow down our breathing in the form of having deeper breaths, deeper cycles of inhalation and exhalation, it actually it actually helps to slow down. It actually helps to balance this erratic energy, and that's how we actually tend to feel more de-stressed. So incorporating some of the relaxation techniques, I'll be just discussing those, and then incorporating vata balancing activities such as abhyanga or nasya. This is from an Ayurvedic perspective that I'm talking about. So abhyanga is basically it's a body massage, or oiling your body. Why oiling? Nowadays massage has become a very common thing, very common practice that people go through it. But if we actually understand the ancient science of Ayurveda, it has got a very, very good significance. It balances this vata energy by providing the nourishing effect to the body. So the vata energy is supposed to be a drying energy. It tends to cause a lot of dryness in the body, in your system, and in fact some in some or the other way in your mind as well. And when we actually nourish our body, our system with right oils in the right amounts via the practices like abhyanga or massage, we actually pacify this vata element, and it actually de-stresses you. It de-stresses your body, it de-stresses your mind. Ayurveda suggests that you can actually, if you do not have time, you can spare 5 minutes or 2 minutes, and you can actually do foot massage before going to bed, in case, for example, if you're feeling stressed out. So these are simple things that you can actually incorporate. And if you have time, spending 5-10 minutes in the morning oiling your body, doing a self massage,
will also, help you out in balancing this energy, and indirectly you will feel that, the body is somewhere or the other, it's becoming more resilient. So that's one. And then, there's another practice in Ayurveda which we call as Nasya. So Nasya is a very simple practice mentioned in Ayurveda, but it has actually, great impact on our system, especially on our mind, on our nervous system. So what is this? Practice Nasya. So Nasya is simple technique where actually, we put 2 drops of any oil, preferably an almond oil. Ayurveda suggests cow's ghee, but I understand it becomes like difficult in today's time. So almond oil is a great option. So you can actually take cold pressed almond oil and put 2 drops of almond oil in both the nostrils at the bedtime. So people who tend to have insomnia or disturbed sleep because of stress, this practice actually helps you with with a sound sleep. And of course, when we put oil in our nostrils, Ayurveda says that, the nose is also a direct doorway to our mind. It actually nourishes the mind, it reaches the mind, and, it nourishes the mind and balances this pranavata, a form of vata energy that controls, the functioning of our nervous system or our mind. So that's how the simple technique of Nasya, putting 2 drops of oil, if you actually, tend to see that, the mind is like always tired, and, if you feel, difficulty in making decisions, or if you feel, there's a sense of fatigue, while working. So this is a very simple technique from Ayurveda that one can actually practice. And I will actually suggest you to, if any one of you face any sleep related concern, this is one thing that you can actually incorporate and see the difference within 1 or 2 weeks only. And once you have a better sleep, because sleep time is a time when body repairs and regenerates and recuperates. So having a sound sleep is absolutely essential. In Ayurveda, sleep is among the 3 pillars of good health amongst, ahar, nidra, and brahmacharya. Nidra or sleep has got a very, very important place in Ayurveda. In general, also if we see, to maintain a state of health and well-being, sleep actually plays a very important role. And stress actually, apart from all these signs what we have seen, it impacts your sleep pattern a lot. So practicing activities like Abhyanga and Nasya, it takes you, it actually gives you that sense of relaxation, and it actually makes you feel very relaxed, very calm, and of course you feel that now you have a bit of control over the condition of stress, whatever you're going through. So these are some of the simple practices. As I just mentioned initially, it's there's a lot we can do about stress. But when it comes to managing stress, there's another very important thing that Ayurveda says the personalization is a last resort. Of course, we can practice these things, but how stress is impacting you, and what kind of practice or a therapy or herbal decoction or changes in your lifestyle pattern, diet pattern will work. That will actually if we'll actually choose as per the body type, in a longer run, that will be like really good. But till the time we actually get into that kind of detail, at least incorporating small little practices or techniques, relaxing yourself is essential. So now let's understand the relaxation response. So what happens when we are stressed? So that's what happens in the body. So in any kind of stage of stress, the body actually gets into the fight or flight mode, which is also known as stress response. And during that state of stress, what happens? Your breathing rate, blood pressure, heart rate, metabolism, sugar levels, hormones like adrenaline, cortisol, and sensory awareness, actually it all goes up
Whereas the activities like thought process, creativity, concentration, and the functioning of systems like immune system, digestive system, it actually, goes down, shuts down. And when we actually, turn on the relaxation response of the body, which is the ultimate resort, for example, you're feeling stressed and immediately you want to actually get into this state of relaxed mode, how you can actually do by turning on the relaxation response. And what is that? I'll just just take you through. So this relaxation response is the natural ability of the body wherein your body release chemicals and brain signals that make your muscles, organs slow down, increase the blood flow to the brain. To be physically relaxed and mentally alert is the goal of relaxation response. And the relaxation response it's a mental active process that leaves the body relaxed. It is best done in an awake state, and it's trainable and becomes more and more profound with the practice. So now coming back to this thing. So basically, when you relax yourself, so there are many forms of relaxation techniques, your deep breathing exercises, and breathing exercises are also of different types in Ayurveda and yoga. We do have different type of breathing exercises, alternate nostril breathing, or Brahmari pranayam, and there are different types of breathing exercises or pranayam mentioned in Ayurveda. Then there are other techniques as well, like guided imagery, which Professor Abha just had taken us to that very good state of relaxation. Then there's progressive relaxation, self-hypnosis, biofeedback, autogenic training. So these are some of the relaxation techniques that people do use to de-stress themselves. So for instance, if we have to pick up a simple technique without getting into too much of technicalities, a deep breathing is as simple as and the most effective tool that a person can actually use. So what if you're actually incorporating a deep breathing, and I just simply suggest my clients and patients to incorporate deep breathing in a very simple manner. They do not have to, spare half an hour or 20 minutes or 30 minutes. They just have to focus on their breathing cycle. 5 minutes in the morning, 5 minutes in the afternoon, and 5 minutes in the evening. So it's as simple, and you don't have to do anything. You just sit in a straight position and just breathe breathe as deeply, as slowly as possible. So inhale deeply and exhale deeply. So what happens when we do a breathing cycle consists of inhalation. Then of course we, stop for a couple of seconds and then we exhale. That's a complete breathing cycle. So if you're having the lesser number of breathing cycles in a minute, that's the whole aim of getting into the deep breathing. And with deep breathing, this relaxation response turns on. Or when you actually sit in a comfortable position and you try to meditate, or you focus on mindfulness, your relaxation response of the body turns on. And when your relaxation response is on with these simple techniques of deep breathing, what happens, when you focus on your breath, when you do 5 minutes of even deep breathing, your breathing rate, your blood pressure, your metabolism, sugar levels, and any hormones in the body like cortisol or adrenaline, they actually they go down. And the processes like thought process, creativity, concentration, they actually increase. That's the impact of relaxation response. So basically that's the science behind doing these relaxation technique. Whichever technique you actually incorporate, whether you actually lie down and just imagine something which is like very sensorial or sensory awakening, that will in the body, it will turn on your relaxation response. And these are the changes that you will see when you will be in that relaxed state. And I actually have been asked this question many a times. There is a simple thing that we can do, because during the stressful situation, it becomes very difficult to even think about different things. So
the simplest of the things is to have this, deep breathing, 20 cycles, at least 3-4 times in a day, and that actually, plays a very good impact on your mind and body. So deep breathing is the simplest and most effective relaxation technique that one can incorporate. It doesn't need anything. You can do it in the morning, before meals, after meals, evening, before bed, anytime. So that's basically the relaxation response. You turn it on with the help of any relaxation technique that actually, that works for you. You can learn these techniques from under the guidance of an expert, and then you can actually do on your own. Now the second pillar, so this was basically, these activities will help in, taming down or slowing down or balancing this movemental energy, which leads to a lot of, movement in your mind via your thoughts and leading to concerns like stress. Now, sometimes what happens, I come across this concern that, it becomes very difficult. A stressed person even can't sit, even can't do anything. In that scenario, there are some, herbs and tonics, mentioned in the science of Ayurveda, which are absolutely great. And some of these are like really renowned in India. And for example, Brahmi, has been taken by students and, by ancient people to enhance the functioning of the nervous system. It's a memory booster. Similarly, other herbs like Shankh Pushpi and Brahmi, Jatamansi, Ashwagandha. Ashwagandha is a very trending herb in today's time. But in Ayurveda, it has been mentioned as a great rejuvenator. It's a great de-stressing herb that one can actually take. Then, there are Ayurvedic preparations like Brahma Rasayan or Saraswata Risht. Then, oils like sesame oil and almond oil. And these can be actually, incorporated in different forms. As I just mentioned, in the form of Abhyanga or a body massage. Body massage is a very effective technique mentioned in science of Ayurveda. And sesame oil is suggested to be the best oil to do this body massage or Abhyanga. It actually de-stresses you immediately. So these are, some of the Narvine herbs that one can actually take. So Shankh Pushpi is, it's very renowned for its action on central nervous system. It boosts the memory, it improves the intellect. And, for example, sometimes it happens, it becomes like way too much for us to handle. There's a lot, to do, and, sitting, doing meditation, and not able to focus, and it becomes like so overwhelming. In that scenario, these herbs are really helpful because they actually bring your body and mind to that state, to that relaxed state. So the Shankh Pushpi, it's a calming, rejuvenating herb, and it can be actually taken in the form of powder, 1 teaspoon twice daily, to de-stress yourself and improve the relaxation effect on the body. Similarly, Brahmi, it's a very renowned herb, and it's available in the form of Brahmi tablets, Brahmi powder. It can be taken, 1 tablet twice a day. It will actually help you, bringing the mental clarity, and it will also encourage the deep and restful sleep. It's a great Narvine tonic, and it improves your memory and sleep. And then another one is Jatamansi. Jatamansi is a great Narvine tonic, and it actually, it also improves your sleep pattern. Ashwagandha, as we just discussed, it's a great rejuvenator. It erases the insomnia. It eases the stress. It actually, it's a rejuvenating anti-aging herb as well, and it improves the resistance to the stress and decrease the cortisol hormone in the body as well. Then, of course, there are these preparations which should be ideally taken under the expert's guidance, but they are highly effective. And, as I mentioned, massaging your body, your head, your feet with simple oils like a sesame oil or almond oil, it actually, takes you, it actually de-stresses your body and makes you feel relaxed. Now, the last
pillar is the right diet for your mind and body. So when it comes to your mind, there are just two things. Of course, it's a very elaborate, subject to talk upon, but I'm just concising it with two things. The way we take care of our diet, in terms of what are we putting inside our bodies, for our mind also, it's very important to put the right things into our mind, right? So to have those right things, I actually divide the whole thing into two phases. The first one is, detoxifying your mind, emptying your mind. On a day-to-day basis, we actually have many thoughts, and 60 to 70% thoughts are repetitive. We are thinking the same thoughts, and we're not even aware of the same. So, when you do journaling is a simple activity of writing down your thoughts. You don't have to think about it. There's no specific pattern to do this. At the night time, when you wrap up your day, you're going to bed to sleep, just, write down your thoughts. If you felt in a certain way, if you felt stressed, if you felt in any way, it's very important to, write down. Writing down, it gives you a cathartic impact on your mind. So just empty your mind by writing down the thoughts in a journal. And then, and how you can nourish your mind with healthy thoughts. And as Professor Abha mentioned, gratitude is a great practice. So, when you have gratitude, even studies say, a state of gratitude and state of stress, they cannot be together. If you're in a state of gratitude, you cannot be in the state of stress, right? So if you practice this, having gratitude about, all the good things in our lives, you feel that, you become more resilient in terms of, handling day-to-day stresses. So simple right diet for your mind, having the right kind of thoughts, and emptying your mind on a day-to-day basis with the help of simple practices like journaling. Then, what kind of diet a person can actually take during the stress. I understand, it's not as simple, when we are actually going through the stress. Food is the last thing, that comes to our mind. But still, we have to have a simple understanding of certain foods which are extremely beneficial, when we go through this, when we're going through, any stressful period. So for instance, B vitamins, especially vitamin B12 and B9, they actually then needed to protect the nervous system and brain health, and they also reduce the risk of mood disorders. So B vitamins are especially very, very crucial. So you just take care that they are part of your dietary pattern, or otherwise in the form of supplements also it can be taken. Antioxidants are very, very important, because during the state of stress, there's a lot of free radical formation, and antioxidants actually help to fight this oxidative stress and get the body rid of these free radicals. So vitamins A, C, and E, they are very, very crucial. And when these free radicals build up, they lead to health issues like anxiety and other mood disorders as well. So having antioxidants from food, a person can choose berries or fresh foods, or seeds and nuts. So these are great. Otherwise, they can also be taken in the form of supplements for a certain period of time. Omega-3 fatty acids, they are great foods for brain cells, and they also have the anti-inflammatory property. So what happens, when we actually undergo the stressful period, it's body actually remains in the state of inflammation. And when we actually give something which has anti-inflammatory property, we in simple ways help our body. And some of the simple sources of omega-3 fatty acids for vegetarians, they can actually rely on flax seeds oil, or walnuts, or chia seeds. Otherwise fish oil or fish, it's a great source of omega-3 fatty acids. Then
having good amount of protein is very, very essential. What happens when the stress actually impacts your appetite and your eating pattern? So having a protein will actually give a longer satiety, and it, of course, it's important to repair the muscle tissues as well. Having a good source of protein in the diet is very important. Minerals like magnesium and selenium, they are extremely important. Magnesium actually has got a lot of attention in recent years, and but we have seen it's absolutely necessary for the production of energy and muscle contraction process. So during this process, during this state of stress, there's a depletion of these minerals in the body. So if you have seen this Epsom salt bath is very common, and actually that de-stresses you as well. That's primarily because the magnesium mineral in that particular salt actually helps to de-stress the body. So these are some of the important minerals and nutrients that one takes care of. And last but not the least, Ayurveda says the diet which is rich in prana. Prana means the life force energy. The food which is fresh. What has happened in today's time because of lack of time or other constraints. People, they do rely on packaged foods, and food is cooked at the night, and then of course we are actually eating it the next day. That's a common practice, and it's understandable because the situations sometimes are like that. But that's how the food actually, this kind of food which is not freshly prepared, it doesn't have any life energy. We do eat it, but of course it doesn't actually add on any kind of prana into our body. So choosing the foods which are freshly cooked as much as possible. Of course, when it's not possible, then of course you can have foods like fresh fruits or fruit juices or nuts and seeds that also actually help to prevent the harmful effects of the stress on the body. Reducing caffeinated beverages essential. I think this is one thing that we all know. And the scenario is basically when we are stressed, they are the first choice during that particular period also. So reducing that alcohol, nicotine, of course, all those things. And if we have to pick up a few things, milk is incredibly soothing for the nervous system, and it's a powerhouse nutrient that our body needs to have a stronger mind body complex. In Ayurveda also, milk is supposed to be it actually enhances the ojas, or the life force energy of the body. Nuts are great. So these can be actually taken to counter the effects of stress on the body. So these are some simple tips when it comes to stress. And so these were if I'll have to just recollect, if we are actually able to balance our mental energy with simple activities like putting oil in the night, and incorporating a simple relaxation technique like a deep breathing. Don't, if you're not spending so much of time, that's also fine, but 5 minutes 3-4 times in a day. And then of course, if nothing is actually working out, then we do have our herbs and tonics that one can actually take. Incorporating some antioxidants, vitamin B into the diet is very, very important. And at last, I would just say, when it comes to a stress management, it's basically about managing ourselves. A good management is a stress management. So manage yourself well, in the form of understanding your body, understanding stressors, how they're impacting your body, and what can be actually done in a simple manner. And it's always good to actually take an expert's advice also, because once you understand your concern and you understand, okay, this kind of practice actually helps me, that also takes you to the longer run. So that was it from my side. Yeah, thank you so much. If there are any queries, I think we are open for that. Thank you, ma'am. Now, as we move on to the next part of this webinar, the questions round, we have received some questions and queries related to the topic of today's webinar from the teachers of our school. So I request Ms. Rama Raghura ma'am, Consultant in Training Unit CBSE, to take up the questions with our distinguished speakers. Ma'am Raghura ma'am, please. Hello,
Am I audible? Yes, ma'am. So good afternoon, and thank you all the experts for wonderful suggestions and your inputs. So the first question is being addressed to Professor Shashikala Vanjari. How can teachers effectively balance the demands of their profession and personal well-being, especially considering the unique stressors they face in educational field? This is from Dr. Reshma Ganesh from Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir, Bengaluru. Okay. Ma'am. Yeah. So the first, thank you for this thought-provoking question. Madam, what I would like to suggest, we have to compartmentalize our work. When we go to the school, we have to confine ourselves to the school. When you come back to the house, then you have to forget about the rest. Only you have to focus your housework or house responsibility, home responsibility. Then and then you could manage everything nicely. हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि कंपार्टमेंट में ना रहते हुए हम लोग बहुत जम्बलिंग करते हैं. देखिए, हर बार हम लोग हमारा डेसिग्नेशन और हमारी पोस्ट और हमारा काम लेकर चलेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग एंड टू डू द जस्टिस टू अवर टास्क. So definitely you are very competent person being a teacher. So whenever you leave the school, you leave the things which are very stressful to you. Then you will be happy to overcome your stress. Otherwise हम तो कर ही नहीं पाएंगे ना. हम तो देखिए, हमारा एक जीवन इतना अच्छा है. ऐसा एक श्लोक है, सुखस्य मूलम धर्मम, हैप्पीनेस लाइज इन राइटस कंटेंट. आपने वो काम करने के बाद आपको थोड़े समय के लिए भूल जाना चाहिए कि नाउ आई एम ए टीचर, या आई एम ए वाइस चांसलर, या आई एम ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई एम ए प्रिंसिपल. देन एंड देन it will be possible to get relaxed, you know. Thank I you, think ma'am. बहुत सिंपल आंसर है उसका, वो मैंने दिया. जी जी, थैंक यू मैम. बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हम जब टीचर्स घर में जाते हैं तो कहा जाता है कि तुम अपना टीचरशिप स्कूल में छोड़ के आओ. ये भी कहते हैं. घर में भी लोग जो है हमसे दुखी हो जाते हैं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वी मस्ट कीप इट सेपरेट. द सेकंड क्वेश्चन. देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. हमारी बहुत सारी महिलाएं आईएएस ऑफिसर है, डायरेक्टर्स है, स्कूल की हेड है. यदि वो अपना सब डेसिग्नेशन, इवन यू कंसीडर माय एग्जांपल, अभी मैं यदि वही ओरा में रहती हूँ और वही इसमें जीवन जीना चाहती हूँ तो मेरा तो लाइफ ही खत्म हो जाएगा. हमारी साथ में जुड़ी हुई दो हमारी महिलाएं भी है, बहुत प्रोफेशनल है वो लोग. तो एससीईआरटी का काम कितना होता है, बट सी हर फेस. हमारी दूसरी भी वक्ता है. तो हम लोग ये कंपार्टमेंट बना के रखें और इजीली वी कैन जंप, वी कैन मूव. ये आप बनाओगे ना, आपकी जीवन शैली इस ढंग से होगी तो ही आप जीवन का आनंद ले पाओगे. नहीं तो देखिए, हमारे माथे पे जो, मैं हमेशा बड़े मजाक में कहती हूँ कि माथे पे हमारा जो डेसिग्नेशन है ना, वो नहीं लगाना चाहिए हमने. मुश्किल हो जाता है, जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जी मैम, बहुत क्योंकि सुंदर बात हमारी कही आपने. आइडेंटिटी है ना, हमारी आइडेंटिटी आप गुड टीचर, इफेक्टिव टीचर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर करके है, वो बना के रखिएगा. हम लोग टीचर से आगे आते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, वीसी बनते हैं, कहीं और कुछ बनते हैं. इट हैज नो मीनिंग मैडम, ऑनेस्टली स्पीकिंग. हमें कोई नहीं पूछता, पर हम टीचर होने के बाद हमारे छात्र हमें याद रखते हैं. वो हमारा टीचिंग अच्छा होने के कारण ही उनके दिमाग में हमारा एक अच्छा इंप्रेशन रहता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर यूजलेस. बहुत बोल्ड स्टेटमेंट कर रही हूँ, माफ कीजिएगा, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. जी. प्रोफेसर आभा शर्मा, आपके लिए एक प्रश्न है. दिस इज फ्रॉम न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, अंबिकापुरम, छत्तीसगढ़.
And this question says, how can we handle ourselves in the most stressful situation at workplace? आभा मैम। हाँ जी, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप वर्क प्लेस पे अपने आप को एक कूल और मोस्ट वांटेड पर्सनालिटी कैसे बनाते हैं। बिकॉज जैसा कि मैडम ने कहा कि SCERT में कितना काम होता है, हार्डली हमें सैटरडे संडे मिलता होगा, मुश्किल ही है, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट वी गेट लिटिल टाइम फॉर आवरसेल्व्स टू गेट रेस्ट एंड ऑल। आप अभी भी आंख से और गले से महसूस कर सकते हैं कि अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में नहीं हूँ, बट it's always my pleasure, and I feel like giving my services to this nation, to the community, to my fellow colleagues, and I love to do that. तो until unless आपके पास पैशन नहीं होगा किसी चीज का, जब तक आप हैप्पी नहीं होंगे किसी चीज को करने में, तब तक आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा स्टार्टिंग में ही डॉक्टर जैन ने बोला था कि आपको हैप्पी रहना है, अब कैसी भी सिचुएशन है। अब आपको इम्पोर्टेंट क्या है इन सब सिचुएशन में कि आप वर्क लाइफ में कैसे अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रख सकते हैं। मैं आपको काफी सारी स्लाइड्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ उस चीज को, पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी हैं कि आप अपने वर्क को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, आप अपने वर्क को कितना प्लान रखते हैं, करेक्ट टाइम कैसे देख पाते हैं उसका, टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, अपनी क्लास को, अपने कॉल्स को, अपने ईमेल्स को, अपने मीटिंग्स को कैसे स्केड्यूल करते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पर इससे भी इम्पोर्टेंट, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि अपने आप को कभी भी ओवर स्केड्यूल मत करिए, नेवर ओवर शेड्यूल योरसेल्फ। और आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अभी मैम ने एक चीज बताई थी कि आपकी टीचिंग लर्निंग इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। आई टू वट एवर गैदरिंग आई गो, आई ऑलवेज speak this, and I don't know to how many of you I'm repeating this, but I love to disseminate this message to each and every teaching fraternity that what type of hair you make, what sari you wear, what lipstick you wear, what tie you wear, what type of combinations you do, students are never going to remember that. They are going to remember only how you treated them and how you behaved with them, and that's the legacy the teaching fraternity takes with them for entire of your life. And definitely आप ये देखेंगे कि कुछ co-workers या आपके साथी, आपके फ्रेंड, आपके स्टूडेंट्स का कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो जैसा मैम बता रहे हैं कि आप अपने इस पे कभी भी अपना डेजिग्नेशन लेकर के मत चलिए कि मैं टीचर हूँ, या मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, आई एम वाइस चांसलर, because how much you're connected to people, that matters. And you won't believe, I have a free access. मेरे रूम में किसी स्टूडेंट के आने में कोई मनाही नहीं है. They have a free access to come to my room and to spell what exactly they want to communicate it to me. And that's what is the way I carry on my work, and I honestly love what I work. Again, I'll say that it's not the color of the balloon, ladies and gentlemen, that takes it up. It's what is inside the balloon. So आपका व्यवहार, आपके values, आपके skill, this is what is going to make you important, make you wanted, and make you lovable. Thank you. Thank you, Professor Abha. The next question is with Dr. Taruna Yadav. What are the effective relaxation techniques for managing stress, such as mindfulness, deep breathing, or progressive muscle relaxation? This question is from Principal of Bardawan Model School. Taruna ma'am, Dr. Taruna. Yeah, so that's a great question, by the way. And as actually I just mentioned in the presentation, we do have like a lot of stress management techniques, and and every technique has their own benefits. So every technique is great in their own sense. But what happens, there are a couple of techniques that really work for certain people. For example, if you have a tendency of getting like really racing thoughts during stress, then something which actually slows down, like taking control over your breath, and that actually helps to have a control over your mind also. So a deep breathing is really beneficial for people who tend to have like racing thoughts, who tend to have anxiety, who tend to actually get into that state of
and non-fear because of stress. So, so that's how, it is very, very helpful when the stress impacts, or the reaction of stress happens in such way in some individuals. And, then of course, there's another category as well that we have seen. Some people in stress, they tend to shut down. For them, have doing an activity which will, calm down, because they're already calm. So they need to stimulate, so activities like, going out for a walk, or, doing, jogging or some physical activity, or, doing pranayams like a Brahmari pranayam, or doing group activities will be actually beneficial. So, reaction of stress is also different for different individuals from a treatment's perspective, I'm telling you. So choosing the technique, as per your reaction is very important. If you are like all over, there's a state of confusion, there's too much of, thoughts, anxiousness, etc. Deep breathing, getting into the state of mindfulness, meditation is absolutely great. If you tend to shut down, if you tend to distance yourself from the situation, getting into that support system, getting into that stimulation is very, very important. So all the activities are absolutely beneficial in some or the other way. But what actually will help you will depend on your reaction. But to conclude, I would say one thing that I've been suggesting, all these years is the deep breathing. It's the simplest of the practices. And one doesn't have to, sit for, 20 minutes or 30 minutes, even 5 minutes. If they're actually able to do it, 3-4 times in a day, it's absolutely great. Thank you, Dr. Taruna. The list of questions is large. There are so many questions to ask, but due to this paucity of time, we are not able to take all the questions, but I know that most of these questions you have already answered through your presentations. Now I would invite Gulia Madam, Sudesh Gulia Ma'am, for the vote of thanks. Gulia Ma'am. Thank you, ma'am. With a heart full of regard, as we conclude this insightful webinar on stress management for teachers, I, on behalf of CBSE, extend my sincere thanks to each one of you for your active participation and valuable contribution. First of all, I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chairperson CBSE for being the visionary force behind the conception of the Stressful Management webinar for teachers. Ma'am, your foresight in recognizing the need for such an initiative and your commitment to the well-being of our educators have been truly inspiring, and we look forward to more such thoughtful endeavors under your guidance. Now, I would like to thank our Director Training CBSE for your support in making the execution of this webinar possible. Sir, this webinar has been a testament to your passion for fostering a positive environment for our educators. Thank you for the guidance and encouragement to all of us. Further, on behalf of CBSE, I extend my heartfelt thanks to the esteemed speakers for their enlightening and empowering presentations filled with wisdom and practical tips, and generously sharing expertise on the crucial topic of stress management for educators. We deeply appreciate that. Ma'am, Professor Shashikala Vanjari, as an educator, your contribution has been instrumental in equipping us with tools to address the stress challenges effectively and scientifically towards leading a more balanced lifestyle. Professor Abha Sharma, ma'am, your insights have undoubtedly provided our teachers with practical strategies and a renewed sense of purpose. We look forward to implementing the principles you shared to fostering a healthier lifestyle. Dr. Taruna Yadav, ma'am, your guidance on incorporating Ayurvedic practices into our daily lives, emphasis on balanced living, incorporating sattvic diet, balancing Vata energy has been both informative and inspiring. Now, I would like to thank Dr. Sandeep Kumar Jain, Joint Secretary Training, CBSE, for you shedding light on the importance of this webinar, for your active role for the conduct of this webinar. I thank Ms. Rama Raghuram ma'am for her participation and assistance for this webinar. Now, the attendees who joined us from different corners of the educational landscape,
Thank you for your engagement and your thoughtful questions. Your enthusiasm has contributed to the success of this event. Now our appreciation extends to every teacher, the unsung heroes in the classrooms, for their unwavering dedication and commitment to shaping the future of the students. This webinar was designed with you in mind, and we hope the strategies discussed will contribute to your well-being. May the lessons learned today continue to resonate, fostering a culture of well-being in our educational and professional journey. Further, I thank all the heads of Center of Excellence of the board, the regional officers of the board, district training coordinators, DDTCs, country training coordinators, city coordinators, resource persons, and hubs of learning with whose efforts we could reach you today through online mode. As we wrap up, let us carry forward the spirit of today's discussion. Remember, self-care is not a luxury, but a necessity, especially in the demanding field of education. Let us cultivate a culture of well-being within our schools and support each other in creating a healthier and more resilient teaching community. Together, we can foster environments where teachers not only impart knowledge, but also thrive personally and professionally. Once again, thank you and wishing you all a stress-free and fulfilling teaching experience ahead. With this, I, Sudesh Gulia, Under Secretary IT, Training Unit, CBSE, announce the conclusion of this webinar. Dhanyavad. Thanks to Sudesh. Thank to you. Sudesh. Thank you. ma'am. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Hello, Thank speaker. you. Yes. Thank you. Thank you all, ma'am. Thank you. It was wonderful being with all of you. Thank you. Thank you.